So hello guys and welcome to the channel. So today we are going to solve the LeetCode 2022, and the question is like we have to convert the 1D array into a 2D array. So let's see the question. So the question is like we are given a zero index one-dimensional integer array original, and there are two integers given m and n, and we are asked to create a two-dimensional array with m rows and n columns. Okay. So the elements from indices will be 0 to n minus 1 and n to 2 into n minus 1, and then 2 into n to 3 into n minus 1, and so on. Okay. So let's see the example. So for the question purpose, I have solved this question on a sheet so to make you understand better. So let's go there. So let's come to the question. So I'll tell you two approaches today to solve this question, but first let us understand the question a little better. So the original array here is 1 2 3 4, and we have to create a 2D array. Okay, so that 2D array will, here it is given is m is equal to 2 and n is equal to 2, which will be 2 cross 2 array. So first thing which you have to understand is like if the number of elements in the original 1D array, that is the number of elements in the original 1D array should be, those elements should be equal to m into m. Here that are 4 and m into n is also 4, so that is equal. Hence we can successfully create the 2D array. Otherwise we will not be able to create the 2D array. Okay, so we have to return this thing. I have written the edge case here, so you have to return false. So let's come and we will discuss the first approach. So what I have written here, let me tell you that. For example, total number of the index, here we will have zero indexing. So अपने पास total number of indexes होंगे. For example, number of elements अपने पास 8. For example, total number of elements अपने पास 3 into 3 का होगा, मान लीजिए m into n. सो 0 टू n माइनस 1 पहली जगह आएगा, मतलब 0 टू सेकेंड इंडेक्स तक, मतलब 3 एलिमेंट पहले पे आएंगे, एंड देन n इंटू n टू सॉरी ये 2 इंटू n माइनस 1 नहीं होगा, इट विल बी 2 इंटू n एंड माइनस 1, सो ब्रैकेट नहीं होगा उसमें. सो सेकेंड तरह के एलिमेंट्स आएंगे आपके पास 3 से लेकर के 5, 2 इंटू 3 माइनस 1 विच विल बी 6 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 5, एंड देन 2 इंटू एन मतलब 6 से लेकर के, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं होगा, सेम इस तरीके से होगा, 6 से लेकर के 8, मतलब 3 3 3 करके अपने पास 2D एरे में एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे. सो पहला अप्रोच अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे. फर्स्ट अप्रोच वुड बी वेरी सिंपल. वी विल आइटरेट थ्रू बोथ द एरेज बिकॉज वी हैव अ 2D एरे. सो इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस, एंड देन जे इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एम, जे प्लस प्लस. अपन रिजल्ट एरे में जो अपन ने क्रिएट हुआ वेक्टर और वेक्टर एंड रिजल्ट एरे जो अपन क्रिएट करेंगे, उसमें अपन ओरिजिनल जो अपन को एरे डालते जाएंगे, एंड देन इंडेक्स अपन बढ़ाते जाएंगे, एंड वी विल रिटर्न द रिजल्ट एरे हियर. नाउ सो दिस विल बी गोइंग टू बी आवर फर्स्ट अप्रोच. ओके, बट नाउ अ बेटर अप्रोच वुड बी द सेकेंड वन. Basically, time complexity will be same in both the approaches, which will be O of m cross n. But why the second approach will be better? Because it will be useful to you in the next upcoming questions. Mainly the 2D matrix questions में आपके लिए बहुत useful आएगा ये approach. So ये approach क्या है? For example, मान लीजिए अपने पास एक 1D array है जो कि है 1 2 3 4, ये given है, और अपने पास 2D एरे है ऐसा जो बन जाता है 2 क्रॉस 2 का 1 2 एंड हियर 3 4. सो इफ़ यहाँ पे इंडेक्स ये 0 है, अपन 0 बेस इंडेक्सिंग कर रहे हैं, और ये इंडेक्स 1 है, ये 2 है एंड ये 3 है. इनिशिएट अगर करें i क्रॉस n से, मतलब 0th इंडेक्स एंड n यहाँ पे 2 है, बिकॉज इट है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. सो 0 अपॉन 2 विच विल बी 0, and column will be I modulo n, it is modulo, which will be 0 modulo 2, which will be 0,
सो 0 पोजीशन पे आपका i इक्वल टू 0 का एलिमेंट 0 पोजीशन पे आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया। अब i अगर 1 है मतलब आपका ये 2 पर जाता है, तो रो होगा आपका i अपॉन n विच विल बी 1/2 बिकॉज ये पहला इंडेक्स है और n 2 है, तो अपना 0 है। सो बेसिकली रो 0 पर जाएगा अपना जो इंडेक्स 1 पर एलिमेंट है, मतलब 2। एंड कॉलम विल बी i मॉडुलो n विच विल बी 1 मॉडुलो 2, जो कि आपका 1 आएगा, जो कि फर्स्ट रो है, तो 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब आपका ये एलिमेंट जो है यहाँ पर आएगा। एंड सेम आप 3 के लिए करेंगे तो डेट विल बी 2, तो 2/2 विल बी 1, मतलब रो का वैल्यू आपका जो है ये 1 आ जाएगा, और कॉलम का वैल्यू 2 मॉडुलो 2 विच विल बी 0। सो लाइकवाइज आपका जो थर्ड एलिमेंट है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा। एंड सेम आपका जो फोर्थ एलिमेंट है, मैं दूसरे कलर से डिपिक्ट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कलर्स हो गए, सेम कलर आ रहा है, सेम लिमिट है, कोई नहीं, तो मैं 4 यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से अपन डायरेक्ट ये यूज़ कर सकते हैं कि रो इज इक्वल टू i/n एंड कॉलम विल बी इक्वल टू i%n एंड रिजल्ट रो विल बी इक्वल टू रिजल्ट ऑफ i। यहाँ पे अपन को ध्यान रखिएगा, इंडेक्स को प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस इंडेक्सिंग अपने आप से हो जाएगा, और यहाँ पे हम डायरेक्ट अरे को आप रिटर्न कर देंगे। सो लेट्स कोड इट टू गेट थ्रू दिस। तो अपन अभी कोड करता है। तो सबसे पहले अपन एक क्रिएट करेंगे वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट ऑफ wait let me create that vector array। अपन नेमिंग कर लेते हैं rs and m which will be vector int or sorry n because it is a m cross n। so अपन ने क्रिएट कर लिया एक खाली 2D array। so इसके बाद अपन अपने फर्स्ट अप्रोच पर आते हैं। So first we'll write the edge case that if original of m of original dot size is not equal to m cross n, then we should directly return a false, return an empty array। इसके बाद अपन एक इंडेक्स ले लेंगे जिसको अपन 0 से इनिशियलाइज, then we will loop through the for 2D array। इसके बाद let's just fill our constraints। and we will move the index। after then we will return our result to the array। okay so we have created this little wrong। okay we have done the wrong naming। okay so finally the test cases are being passed and now we'll submit our solution। so this solution is now accepted। let's write our second code। for that code everything should going to be the same except the thing that okay so we will remove our both of the loops and remove this index, and one loop will remove
and x++ there is no need. We initialize row as I upon n. So we will write this original, like we will loop till original dot size. Okay, it will be I modulo n, and the rest of what row and call will be equal to original of I. So yeah, this solution is also being accepted, and the time complexity will be same, because here also we are filling both of the arrays, so that's why it will be O of m cross n only. So time complexity of both solutions will be same, but the logic which I used here is going to be very important in the upcoming videos. So yeah, thank you. So this is all for the video. So if you like the solution, if you like my explanation, then please like and subscribe. Thank you so much. Let's meet in the next video.